Civil Procedure Code. Civil Procedure Code. Fine. Civil Procedure Code. Coming to the direct discussion of sections and order and rules, it is very wise if we start with the nature of this law. Now, classifying the law into two types. Classifying the law into two types. Law is classified under these two broad heads. One is substantive law, and the other one is the adjective law. Adjective law. We can also say procedural law, because our current discussion is all about the procedural law. Now, what is actually substantive? Yes, it determines the rights and liabilities. It determines the rights and liabilities of parties. While this procedural law is actually the practice or enforcement of the rights and liabilities. Yes, now keeping the pen down, let us try to understand what is substantive law and what is procedural law. One can take an example of this substantive law by taking the reference of Indian Contract Act, Indian Evidence Act, by taking the concept of Indian Penal Code. These are actually those statutes which deals with the rights and liabilities, but not with the framework of machinery and enforcement. सर थोड़ा हिंदी में आ जाइए. ओके, सब्सटेंटिव लॉ बात क्या होता है? सब्सटेंटिव लॉ में आपका कुछ प्रोसीड्यूर के बारे में कुछ डील नहीं होता है, वो खाली राइट्स एंड लायबिलिटीज के ऊपर फोकस करता है. जैसे मान लो 2 मिनट के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या है? दोनों व्यक्ति मिलके एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो दोनों के ऊपर ड्यूटी भी है, ऑब्लिगेशन भी है और राइट भी है. तो मैंने क्या बोला? ड्यूटी, ऑब्लिगेशन. अभी ऑब्लिगेशन कोई नहीं निभाया तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाता है? लायबिलिटीज. तो वैसे तरह आप इंडियन पिनल कोड में देखो, which deals with avoid crimes and offenses. If a particular person has committed this crime, then it is the punishment. But whether such person has committed the crime or not, how it is to be justified? For proper justification, we have to follow the procedural law. Because without the help of the procedural law, the court will not be able to justify the particular issue. So, this substantive law becomes effective. Substantive law के जो मतलब उसका जो प्राण है होता है ना, उसमें जिंदगी डालता है कौन? प्रोसीड्यूरल लॉ. सो procedural law actually pours oxygen to substantive law. Just studying the substantive law will not make a useful you can say will not make a useful thinking of a particular subject, because we have to also correlate that substantive law with procedural law. जैसे मान लो 2 मिनट के लिए कुछ ऐसा लॉ भी है जिसमें सब्सटेंटिव लॉ भी है, प्रोसीड्यूरल लॉ भी है. सर कैसे? इंडियन एविडेंस एक्ट देखो, उसमें सेक्शन 115 बोला गया. आप नोट करो मेरा बात, सेक्शन 115 बोला गया. आप सीआरपीसी में भी देखो सेक्शन 125 जो मेंटेनेंस के बारे में बोलते हैं. 125 in criminal procedure code contains both substantive portion and the procedural portion. मेंटेनेंस कौन मांगता है? कौन? वाइफ, मदर, फादर. किसके केस में? हस्बैंड, नहीं तो सन,
इफ ही इज हैविंग सफिशिएंट मींस, तो राइट के बारे में बोला है, अभी नहीं देता है तो लाइबिलिटी बनता है, तो लाइबिलिटी बनता है तो उसका तरीका है हाउ टू फाइल द मैटर, हाउ टू फाइल द पिटीशन, इट इज गिवन इन सेक्शन 125। सो पहले का पार्ट सब्सटेंटिव है, किसको क्या मिलेगा, कौन क्लेम कर सकता है और कैसे मिलेगा, कैसा फाइल करना है, कैसे इंटरी मेंटेनेंस मांगना है, वो सेक्शन 125 में दिया है। सो वी कैन से दैट सब्सटेंटिव लॉज आर द एग्जांपल्स ऑफ IPC, right? Are the examples of IPC, Indian Contract Act, Indian Contract Act. We can also say about Transfer of Property Act, TOPA 1882, पहले 1872 होगा, right? These are the examples. और भी इसके साथ ज्यादा आप जितना आप डील करोगे एग्जाम्पल तो निकालते जाएगा। वैसे प्रोसीड्यूरल का, जैसे हम लोग का आज का टॉपिक है CPC, वैसे CRPC भी है, वैसे एविडेंस भी है, वैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, राइट? तो आपका ये दो कैटेगरी होता है। तो इट हैज बीन सेड बाय वेरियस जजेस ऑफ high courts and respective supreme courts that substantive law is actually to define, substantive law क्या करते हैं, is actually to define what यूज किया मैंने, create, confer, क्या confer करता है, confer substantive legal rights, substantive legal rights। बट यही राइट्स मान लो कोई इन्फ्रिंज करता है तो आप कैसे कोर्ट में जाओगे, विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोसीड्यूरल लॉ, यू कैन नॉट डू दैट। तो प्रोसीड्यूरल लॉ के लिए आपको देखना पड़ेगा, इट प्रोवाइड्स प्रोसीड्यूरल ऑब्जेक्ट, इट प्रोवाइड्स मशीनरी एंड एनफोर्समेंट ऑफ लीगल राइट्स। तो बात आपको समझ में आया पहले। तो CPC इज एक्चुअली इन द नेचर ऑफ व्हाट, इट इज इन द नेचर ऑफ प्रोसीड्यूरल लॉ। चलिए